Good morning, friends. Welcome to the channel Is English by Edison. And in this video, we are going to talk about how we can enhance our spoken English using participles. Then, first of all, you'd like to ask, what are participles? आप जानना चाहेंगे कि participles क्या है? Yeah, participles are vowel adjectives. What does it mean? They are verbs, but they function as adjective. Verb है लेकिन adjective का काम करता है. And what is the function of adjective? Adjectives qualify noun and pronouns. So they are the verbs which work as an adjective and they qualify noun and pronoun. I'm giving you some examples of present participle. Yes, look at that. I saw an old woman carrying a big basket of flowers. I saw an old woman carrying a big basket of flowers. So look at that. Carrying is present participle, her plus ing, and it is qualifying that woman. What was the woman? That is here noun. What was the woman carrying? Of course, she was carrying a big basket of flower. So whenever the verb plus ing, that is present participle form of the verb, qualify a noun or a pronoun, it becomes verbal adjective. Look at that. Look at the second sentence. कोई कहना चाह रहा है कि आज संडे है, सारी दुकानें बंद हैं, तो कैसे बोलेगा? इट बीइंग संडे टुडे ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड. देखिए, इसी को आप अगर पार्टिसिपल्स का यूज नहीं करेंगे तो कितना दो सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि इट इज संडे टुडे ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड. तो ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? इट बीइंग संडे टुडे ऑल शॉप्स आर क्लोज. द सेकेंड वन इज बेटर, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दोनों दोनों चीज आ जा रहा है कि आज संडे होने के कारण सारी दुकानें बंद हैं. तो बीइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट इज क्वालिफाइंग the word eat as well as Sunday. The both are noun. It is a pronoun and Sunday को qualify करा. क्या कारण है? If you ask the question, why are the shops closed today? The answer is clear. It is Sunday today. So it being Sunday is the part of that sentence having the participle being, be plus ing, present participle, and it is qualifying the word Sunday. That Sunday होने के कारण सारी दुकानें बंद है. इट बीइंग संडे टुडे ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड. Then present participle, you can use beautiful words in present participles, like you can say that we found the birds chirping melodiously. While passing through the forest, we found the birds chirping. We saw lips, whispering songs while we were passing through the forest. The lips were found whispering beautiful songs. The moon was shining bright and with a dim light. In this similar manner, you can say that वह बहुत ही थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया. He being tired just went to bed very early. You are using present participles in ordinary form also. जैसे she is making flower. She is making a garland with the flowers. So making is also present participle. They are speaking about what they are going to perform tomorrow. They are planning to visit some other cities nearby. So planning is also verb plus ing is present participle. These are also ordinary participles. But when we said that it being a Sunday today, all shops are closed, it is making some sense and it is beautifying the sentences. Then come to past participle. Past participles are the V2 form of the verb. Like,
Past participles are V3 form of the verb, V3. And like in passive also we use past participle. जैसे मान लीजिए break, broke, broken. So we use often broken, the third one. And V2 is simple past and V3 is past participle. So we say that the broken chair was given for repairs. So here the chair is being qualified by the verb broken, and that is why it is working as an adjective. मैंने टूटा हुआ चेयर को रिपेयर के लिए दिया गया, तो इसको कैसे बोलेंगे? द ब्रोकन चेयर वॉज गिवन फॉर रिपेयर. इट्स अ वेरी नाइस वन. अगर मान लीजिए आप दो सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करना, जैसे वह न्यूज सुनकर स्तब्ध रह गया, तो आप स्तब्ध रह गया मीन्स स्टन्ड रह गया, तो आप दो सेंटेंस बोलिएगा. ही वॉज स्टन्ड, ही हर्ड द न्यूज. इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करिएगा. स्टन्ड बाय द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. हियरिंग द न्यूज, ही रिमेन्ड स्टन्ड, ही रिमेन्ड स्टम्ड. और पास्ट पार्टिसिपल, यस, जैसे कि वह वह वहां जाकर इंफॉर्मेशन लिया, तो आप इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिए. हैविंग गॉन देयर, हैविंग गॉन देयर ही रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, या हैविंग बीन देयर ही रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन. पास्ट पार्टिसिपल का यूज और भी आप कर सकते हैं, जैसे सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, ही डिसाइडेड टू रीड अगेन. Torn, T-O-R-N, torn by the storm, the villages looked quite deserted. Torn by the storm, torn. Torn by the storm, the village looked quite deserted. स्टॉर्म के द्वारा अफेक्ट होने के बाद विलेज बिल्कुल खाली खाली लग रहा था. Yes, flooded in rain, most of the plants, remained, uprooted. Flooded in the rain, most of the plants remained uprooted. So flooded is past participle. Then yes, third one is perfect participle. In perfect participle, we are going to use having plus V3 or having plus been plus V3. So what is difference between these two? Having plus V3 is perfect participle active form, और having plus been plus V3 is in passive form. जैसे आपको कहना है कि वह 3 बार असफल रहने के बाद काफी टूट गया, अंदर से काफी टूट गया. Having been unsuccessful 3 times, he was broken from inside. He was broken from inside. Having reached the station, he boarded the train. स्टेशन पहुंचकर वह ट्रेन को पकड़ा या ट्रेन में चढ़ा. Having appeared for the second time, she eventually succeeded in UPSC exam. वो 3 बार UPSC एग्जाम में बैठी और थर्ड अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुई. Having appeared thrice in UPSC exam, she succeeded. So perfect participle is also very useful in combining sentences and making expressions beautiful. जैसे आपको कहना है कि मैं दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिला. Having reached Delhi, I met the prime minister. अगर आपको कहना है कि मैं स्नान करने के बाद प्रेयर के लिए बैठा, तो having taken bath, I sat for prayer. यदि आपको कहना है कि बार बार प्रैक्टिस करके मैंने परफेक्शन प्राप्त की, तो हैविंग प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आई रीच द परफेक्शन, आई रीच द परफेक्शन. तो इस तरह से आप देखिए कि 3 पार्टिसिपल हुआ.
प्रेजेंट पार्टिसिपल भर प्लस आईएनजी। तो सिंपल भी ऐसे भी देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। जैसे शी वाज रीडिंग ए बुक व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर, जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी वाज रीडिंग ए न्यूज, रीडिंग इज हियर प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इसी को अब हम लोग वर्बल एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करेंगे? जैसे हमने बताया कि मैंने एक बूढ़ी महिला को फ्लावर्स के बास्केट को अपने माथे पर ले जाते हुए देखा। तो आई सॉ एन ओल्ड वुमन कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स ओवर हर हेड। आई सॉ द चिल्ड्रेन playing in the garden. So here playing is present participle. I saw the leaves of the trees whispering songs. So whispering is here present participle. It being a holiday, all shops are closed. आज छुट्टी का दिन है इसलिए सभी दुकानें बंद है. It being a rainy day, we decided to remain inside. Like that. He being a scholar was invited to deliver a lecture. परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने बताया अपास्ट पार्टिसिपल में कि V3 होता है। जैसे टॉर्न बाय द स्टॉर्म, द विलेज लुक्ड डेजर्टेड, द ब्रोकन चेयर वाज गिवन फॉर रिपेयर्स, द डैमेज्ड रोड वाज रिपेयर्ड इमीडिएटली, the affected patients were admitted immediately. The injured man was rescued and was taken to the hospital. The injured man. The wounded child was given first aid. Like that. Then come to perfect participle. Perfect participle में having plus V3 या having plus been plus V3. जैसे वह बार बार असफल रहने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया। Having been unsuccessful repeatedly, he got disappointed. वो 2 बार कोशिश किया, थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ। Having appeared thrice in UPSC एग्जाम, he eventually became successful. तो इस तरह से हम पार्टिसिपल्स का यूज अपने डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप क्लास 11 में एक लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय कुशवंत सिंह। अब उसमें मान लीजिए कि ग्रैंड मदर और ये नरेटर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको आप बहुत तरह से बोल सकते हैं पार्टिसिपल लगा करके कि ग्रैंड मदर अकेले गार्जियन थी इसलिए वो सारा लालन पालन या सारा नर्चरिंग का जिम्मा ली हुई थी। द ग्रैंड मदर बीइंग द ओनली गार्जियन ऑफ द फैमिली टुक चार्ज ऑफ द नर्चरिंग द नरेटर। Having been disappointed with the teaching of the new school, she was very sad because there was no teaching of religion there. The grandmother often was seen feeding the sparrows with broken pieces of bread. Grandmother was often seen, वो छोटे छोटे जैसे स्पैरोज को खाना खिलाती थी, रोटियां देती थी, तो उसी को आप दीजिएगा कि जैसे आप बोले कि वी सॉ द ग्रैंडमदर फीडिंग दी स्पैरोज विथ ब्रोकन पीसेस ऑफ ब्रेड, और वही आप अगर बोलिएगा द ग्रैंडमदर वाज ऑफन सीन feeding the sparrows with broken pieces of bread, it will be a standard one. तो आप अपने भाषा को इनरिच कर सकते हैं उसी तरह से जैसे कि आप उसी लेसन से रिलेटेड कि जब ग्रैंड मदर को पता चला कि नरेटर इंग्लिश स्कूल में एडमिट हो गया है तो धीरे धीरे वो अपना दूरी बना ली। Having known the fact that the narrator was admitted in English school, the grandmother often remained alone. She could no more, help him in his homework. But in the village, being in the village, she often accompanied him to the temple. While the narrator studied there in the temple school,
she read the scriptures. The grandmother, being a pious lady, often spent her time counting the bits of rosary. So these are the things that you can, in every lesson you can use present participle and past participle and perfect participle. That in any lesson you take the example of the first flight about the seagulls, that having failed to fly several times, the young seagulls often remained sad and neglected by his parents. एक बार वो उसको उड़ने की कोशिश किया. Having tried to fly once, he flippered his wings and eventually fell down. Like that, uh, the mother often saw this young seagull sitting on the rocks and waiting for food. Having known about his fear, the mother decided not to help him. And having learned gradually to fly and fall, the seagull eventually learned to fly and he successfully made his first flight. So these are the things that we can often use in lessons. The teacher, the educators must make the children use present participle, past participles, and perfect participles in enriching and enhancing the words and spoken English, particularly when you are explaining literature. अलग से ग्रामर पढ़ाने की जरूरत नहीं. आप कोई भी लेसन्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप ये जरूर जोड़ें, ये सब यूजेस करें, और इससे बच्चों में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना. जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि while walking on foot I found one snake crawling ahead, तो कितना अच्छा लगेगा. While being among my friends I enjoyed the party, like that. So having been a newcomer, I faced a lot of difficulty in the hostel. Having been a newcomer, मैंने हॉस्टल में भी नया नया ही प्रवेश लिया था, मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा. Having known the fact, I realized that I should confess the reality. तो जब आप कोई चीज, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं या बच्चों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स को बताइए. क्योंकि पार्टिसिपल्स क्या है? पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव. वर्ब है लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करता है. एडजेक्टिव का वर्क क्या है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा बताना. जब आप कहीं कोई वर्ड्स को, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि द वुमेन बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी was given a warm welcome. तो यहाँ द वुमेन बीइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो चेयरपर्सन थी उस कमिटी का, इसलिए उसको वार्म वेलकम दिया गया. द डिप्टी कमिश्नर being the chairperson of the school was greeted by all the staff members. देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है. तो पार्टिसिपल्स का यूज करना चाहिए और इससे आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो और इनरिच होगी. थैंक यू. दिस इज एडिशन ऑन द चैनल इज इंग्लिश बाय एडिशन. थैंक्स अ लॉट.